Assalamualaikum 5 class. I'm a science teacher. Open your book. Today we will study about the animal cell. What is animal cell? What are cells basically? And what are the main parts of cells and what are their functions? It's very easy and very interesting. So let's start. All living things are made up of cells. हर तरह के हमारे पास जो जानदार हैं अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाए वह सब किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से. सेल्स होल्ड all of the equipments and information necessary to keep an organism alive. सेल्स क्या करते हैं? वो सारी इक्विपमेंट्स, वो सारी चीज़ें और वो सारी इंफॉर्मेशन जो मालूमात हैं वो अपने पास रखते हैं ताकि जो ऑर्गेनिज़म है वो ज़िंदा रह सके. Each type of cell perform a different function. हर सेल की जो है वो एक टाइप होती है. सेल्स की भी बहुत सारी बच्चे टाइप्स होती हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन. हर सेल की जो टाइप है उसका एक डिफरेंट फंक्शन होता है. देयर आर नर्व सेल्स इन योर ब्रेन दैट रिसीव मैसेजेस एंड अदर्स दैट सेंड मैसेजेस. हमारी बॉडी में जो ब्रेन है उसके वो किससे मिलकर बना है? नर्व सेल्स से. नर्व सेल्स हैं और नर्व सेल्स का क्या फंक्शन है? वो रिसीव करते हैं मैसेजेस को और सेंड करते हैं मैसेजेस को. यानी कि जो बॉडी से थ्रू आउट हमें जो मैसेजेस रिसीव होते हैं ब्रेन को वो किन सेल्स के थ्रू रिसीव होते हैं? नर्व सेल्स के. और जो बॉडी को हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो मैसेजेस जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? नर्व सेल्स के थ्रू ही जाते हैं. There are blood cells that carry oxygen around the body. Blood cells हैं जो कि क्या करते हैं? That carry oxygen around the body and oxygen is very much essential for the proper function of our body. Otherwise we can't survive. And others that protect the body against disease. और ऐसे cells भी हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? डिजीज़ से, किसी भी बीमारी से. ठीक है. And animal cells look like this. Animal cell जो है वो ऐसे का दिखता है. ठीक है. Now come to the main parts of the cell. The main parts of the cells are nucleus, cytoplasm, cell membrane and vacuole. Main parts क्या हैं? The names of main parts of the cells are nucleus, cytoplasm, cell membrane and vacuole. The nucleus is the control center of the cell. हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन है. द ब्रेन इज़ अ कंट्रोल सेंटर फॉर आवर बॉडी. जिस तरह जस्ट लाइक यू कैन से दैट द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल इज़ द वेरी पर्सन हु मॉनिटर्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्कूल. जिस तरह हमारे स्कूल का जो हेड होता है वो क्या करता है बच्चों? हमारे स्कूल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है गाइड करता है टीचर्स को. ठीक है. सिमिलरली न्यूक्लियस जो है वो भी यही काम करता है, कंट्रोल करता है सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग को. द न्यूक्लियस ऑल्सो कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. जो हमारा सेल है उसमें जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी कंट्रोल किया जाता है न्यूक्लियस से. ठीक है. न्यूक्लियस जो है वो जज करता है सारे के सारे फंक्शन को जो हमारे सेल में परफॉर्म किया जा रहा है. ठीक है. Now come to the cytoplasm. The cytoplasm help to remove materials around the cell and also dissolve waste. Cytoplasm क्या है? Cytoplasm is a liquid-like material that is present in the cell. सेल के अंदर liquid-like material है that helps the material to move easily around the cell. It's very easy. साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है? वो लिक्विड है ना, तो लिक्विड जो है वो क्या करेगा? वो इजीली हेल्प करेगा मटेरियल्स को कि वो आराम से मूव कर सकें सेल के अंदर. एंड आल्सो डिसॉल्व द वेस्ट. और जो वेस्ट है जो हमारे सेल में मेटाबॉलिज्म परफॉर्म किया जा रहा होता है थ्रू आउट, वो उसका जो वेस्ट मटेरियल रिलीज़ किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है, उसको डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर. ठीक है. Now come to the third main part of the cell, that is vacuole. The vacuole is a space
in the cytoplasm containing air, liquid, or food. Vacuole it's a balloon-like structure, you can say. And what's the function of cytoplasm? Vacuole. The vacuole's function is to provide air, liquid and food to the cell when required. जब सेल को ज़रूरत हो एयर की, लिक्विड की या फूड की, तो जो वैक्यूल है वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब ज़रूरत पड़ती है सेल को, इट प्रोवाइड्स द वेरी एयर एंड लिक्विड for the cell. Okay, the cell membrane acts as a barrier to the world outside the cell. जो cell membrane है, it's a very important part of cell. The cell membrane acts as a बैरियर के तौर पर काम करती है, यानी कि जिस तरह हमारे घर के बाहर जो हमारा यू कैन से दैट सम बिल्डिंग्स हैव वॉचमैन है, वो क्या करता है, वो बैरियर के तौर पर काम करता है ताकि कोई भी जो थीफ है, किसी भी तरह का कोई बुरा शख्स है, वो बिल्डिंग में एंटर ना हो सके. सिमिलर इज़ द वर्क ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. क्या फंक्शन है? इट लेट्स द राइट थिंग्स आउट ऑफ द सेल. जो अच्छी चीज़ें हैं उनको जो सेल के अंदर जो है वो आने की या बाहर जाने की इजाज़त देता है. एंड स्टॉप डेंजरस थिंग्स गेटिंग इन. और जो बुरी चीज़ें हैं उनको अपने अंदर आने से रोकता है. यू नो दैट इफ़ बैड थिंग्स कैन कम इन द सेल, दे मे डिस्ट्रॉय द सेल and can produce diseases as well. So the cell membrane is the watchman of the cell. Basically it's a boundary around the cell that acts as a barrier to the outside world of the cell. Alright students, and the smaller parts within a cell are called organelles. और जो smaller parts हैं सेल के अंदर वो क्या कहलाते हैं? वो organelles कहलाते हैं. ठीक है, we will study we will study in detail in our next stages of your classes. अगली classes में आप इसको detail से पढ़ोगे that what are organelles and what is cell basically, and each organelle has its own name and its function. So this is the whole description of the animal cell. I'll tell you with the diagram too. See students, animal cell. I'll make diagram here. See, it's the outermost covering of the cell, that's called cell membrane. Alright, we also studied about the nucleus that is present in the mid. This is nucleus. This is nucleus that acts as the brain of the cell. It is also control center. These are some organelles that are present in the cell. And these are sac-like structures called as vacuoles. Alright students, so these are the very main parts of the cell. See students, there is also the liquid. Cell is filled up with a liquid that is called the cytoplasm of the cell. And what's the function? We studied now. The function of cytoplasm is to dissolve the waste material and allow the material to move easily in the cell. So this is the basic diagram of animal cell. Very easy, you can make easily. I have also made that to make your concept more clear, that how to draw a diagram of animal cell. So this is our today's lecture. We studied that there are many types of cells. Each cells type has its own function. हर तरह का जो सेल है वो एक परफॉर्म करता है, डिफरेंट तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है बच्चों. जिस तरह ब्रेन सेल है हमारे पास, नर्व सेल्स, वी कैन से ब्लड सेल्स we have that provide oxygen, that supply oxygen to the body parts. Similarly, the nerve cells that send messages, also receive messages throughout the body.
So this is animal cell. The main parts of cell we studied, that nucleus, cytoplasm, cell membrane and vacuoles are the main parts of the cell, and the smaller parts that are present in the cells are the organelles. ठीक है, ये सब क्या है, ये organelles हैं that are present in the cell. So this is the whole description of the animal cell.